Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Rukmini Rukmini Gauranidhai, 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 Jaya Gauranidhai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Haribo, 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 Haribo. Jai Sri Rukmini Dwarkadhish ki, Sri Gaunitai ki, Srila Prabhupada ki, Nidai Gaur Brahmanande.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaivam Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayet Nasta Preshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamasloke Bhakti Bhavati Naistiki. So reading from Srimad Bhagavatam, Canto 7, Chapter 12, Text 1. Please repeat. Sri Narada Uvacha Brahmachari Gurukule Vasandantaha Gurohitam Acharan Dasavat Nichaha Guru Sudridha Sauridaha. Sri Narada Uvacha Sri Narada Uvacha Brahmachari Gurukule Brahmachari Gurukule Vasandanto Gururhitam Vasandanto Gururhitam Acharan Dasavanicho Acharan Dasavanicho Guru Suridha Sauridaha Guru Suridha Sauridaha. Sri Narada Uvacha Brahmachari Gurukule Sandanto Gururhitam Acharan Dasavanicho Guru Suridha Sauridaha. Sri Narada Uvacha Brahmachari Gurukule Vasandanto Gururhitam Acharan Dasavanicho Guru Suridha Sauridaha. Uvacha Brahmachari Gurukule Vasandanto Gururhitam Achavanicho Guru Suridha Sauridaha. Narada Uvacha Brahmachari Gurukule Vasandanto Gururhitam Acharan Dasavanicho Guru Sudridha Sauridaha. Sri Narada Uvacha Brahmachari Gurukule Vasandanto Gururhitam Guru Suridha Sauridaha. Sri Narada Brahmachari Gurukule Vasandanto Gururhitam Acharan Dasavanicho Guru Suridha Sauridaha. Mataji
Shri Narada Uvacha Brahmachari Gurukule Asandanto Gururhitam Acharanda Savanitcho Guru Sudrida Sorida. Your Hindi? No. श्री नारद उवाच श्री नारद मुनि ने कहा ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी विद्यार्थी जो गुरु के निवास में रहता हो गुरुकुले गुरुकुले गुरु के आवास पर गुरु के आवास वसन सन रहते हुए दांत निरंतर इंद्रिय संयम का अभ्यास करते हुए गुरोहितम एकमेव केवल गुरु के हित में के लाभ में कुछ भी नहीं आचरण करते हुए दासवा एक गुलाम की तरह निज समर्पित आज्ञाकारी गुरु आध्यात्मिक गुरु को सुदृढ़ सौहृद मैत्री भाव में मित्रता में या शुभकामना में। अनुवाद कृष्ण कृपा श्रीमती अवचनानी भक्तिदान स्वामी श्लोपाद। नारद मुनि ने कहा विद्यार्थी को चाहिए कि वह अपने इंद्रियों पर पूर्ण संयम रखने का अभ्यास करे, उसे विनीत होना चाहिए और गुरु के साथ दृढ़ मित्रता की प्रवृत्ति रखनी चाहिए। ब्रह्मचारी को चाहिए कि वह महान व्रत लेकर गुरुकुल में केवल अपने गुरु के लाभ के लिए ही रहे। Om Jnana Hantimirandasya Jnananjana Salakaya Chakshurun Meditam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Kadhamayam Swapatantikam. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesa Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshware Rishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Vansa Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhyaevacha Paditanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. So I would like to welcome you all to our Srimad Bhagavatam class this morning. Today's special class on Brahmacharya.
आज विशेष रूप से आजकल ब्रह्मचर्य विषय पर चर्चा करेंगे। Special request. विशेष अनुरोध। Despite we are also grihastas, Mataji is no problem. So this verse explains that brahmachari should stay in Gurukul, resides in Gurukul for the benefits of Guru, for the benefit of Guruji. केवल गुरु के लाभ के लिए। And also acharan means practicing. Is it practice? Practice, abhyas. And dasavan. Dasavan means like dasavat. Dasavat is should be serving like a slave. दास का मतलब गुलाम, बिका हुआ गुलाम की तरह सेवा करें। That's the meaning. And Gurur Hitam, only for the benefit of a Guru. एक में केवल गुरु के हित के लिए जिसके कार्य हो। So Vasan, I forget the word. Vasan means living, right? Vasan अर्थात रहना। So Dasavan means serve like a slave. और दासन का अर्थ है कि सेवक की तरह सेवा भाव से सेवा करना। And Nichaha means submissive and obedient. और नीचे शब्द का अर्थ श्रील प्रभुपाद जी हम बताते हैं समर्पित और आज्ञाकारी। Each word that Narad Muni has used is perfect. श्रील नारद मुनि ने प्रत्येक शब्द का जो प्रयोग किया है वो उत्कृष्ट है। And Surida means with an attitude of friendship for the spiritual master. और मनोवृत्ति कैसे चाहिए? गुरु के प्रति मैत्री भाव हो। So the basic principle of brahmacharya life is celibacy. मूलभूत सिद्धांत ब्रह्मचर्य जीवन का इंद्रिय संयम है। So in this Kali Yuga, without Prabhupada, this brahmacharya life would have not been impossible. और विश्व से वर्तमान कलियुग के वातावरण में इसमें श्रील प्रभुपाद जी के बिना शायद ब्रह्मचर्य जीवन कलियुग के वातावरण में संभव ही नहीं। So one can remain brahmachari only because of the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. कोई ब्रह्मचर्य का पालन कलियुग में केवल भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कर सकता है। And this is something very extraordinary. और यहाँ बहुत ही विशेष है। And to practice brahmacharya life in this Kali Yuga, forget it. कलियुग के वातावरण में ब्रह्मचर्य का अभ्यास बहुत विशेष उपलब्धि। So it is very, very precious and fundamental. So something which is precious needs to be carefully protected, carefully guarded and nurtured. यदि कोई बहुत ही मूल्यवान अनमोल वस्तु होती है तो उसके लिए तीन बातें की आवश्यक है। अत्यंत सतर्कता पूर्वक उसका रक्षण करना चाहिए, protected, guarded, उसका बहुत ही सतर्कता पूर्वक रक्षण करना चाहिए, बहुत ही सतर्कता पूर्वक उसको संरक्षित करना चाहिए, बहुत ही अच्छी तरह से उसको पोषित करना चाहिए। It should be also nourished, अच्छी तरह से पुष्ट होना चाहिए जीवन, so that it can be flourished. ताकि वह और अधिक उत्कर्ष को प्राप्त कर सके। So brahmacharya life is a foundation of varna ashram. तो मानवीय जीवन में वर्णाश्रम पद्धति का मूलभूत आधार है यह ब्रह्मचर्य सिद्धांत। So the brahmanas, the kshatriyas and the vaishyas would be sent to Gurukul. वैदिक काल में ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय या वैश्य हो सभी को बाल्यावस्था में गुरुकुल में भेजा जाता था। And then the guru would ascertain his
varna and accordingly study his character, his attitude for a number of years and fit him according to his propensity in his varna. गुरु अच्छी तरह से प्रशिक्षण देकर उस शिष्य का निरीक्षण करके उसके गुण स्वभाव वर्ण आदि को समझ के उसके वर्ण अनुसार उसे विभिन्न वृत्तियों में नियोजित करता है and choose his life and his ashram. So there's varna first and then ashram. निर्धारित करते हैं गुरु, तत्पश्चात उसका आश्रम उसके स्वभाव के अनुसार निर्धारित किया जाता है. So the Kshatriyas, they have a propensity of becoming passionate. क्षत्रियों में प्रवृत्ति होती है राजसिकता की. So they would get married, become grihasthas. वे गृहस्थ आश्रम की ओर जाते हैं. Vaishyas also would become grihasthas. वैश्य भी होते हैं, वे भी अधिकांश गृहस्थ जीवन के प्रमुख होते हैं. So the brahmacharis, so the brahmacharis would go door to door and would be begging for bhiksha. ब्रह्मचर्य प्रशिक्षण में वह द्वार द्वार पर जाकर गुरु के लिए भिक्षा याचना करते हैं. You know, those time there was no membership. वैदिक काल में आजीवन सदस्य लाइफ मेंबरशिप नहीं रहती थी. Now we have membership director. और लाइफ मेंबरशिप डायरेक्टर रहते हैं. Now. अभी हाँ. So, and we have temple support, we have nitya seva, we have so many support. अभी दुनिया भर के सहयोग प्राप्त होते हैं, नित्य सेवा है, विभिन्न प्रकार के दान सेवाएं रहती हैं. But now the days this is done, collection is done, but in a mood of service. तो अब भले ही हाँ धन अर्जित किया जाता है, दान मांगा जाता है, लेकिन इसमें प्रमुख रूप से सेवा भाव प्रधान है. And some of the brahmacharis who are inclined to, who are brahmanically inclined, some of them would also get married, and some of them would remain brahmacharis. तो कुछ जो ब्राह्मण वृत्ति होते हैं, वे भी कभी-कभी गृहस्थ जीवन को स्वीकार करते हैं और फिर बचे हुए ब्रह्मचर्य जीवन को स्वीकार करते हैं. But Sudras would not come to Gurukul. लेकिन शूद्र कभी गुरुकुल प्रशिक्षण को प्राप्त नहीं करते. Sudras would stay at home and get trained by parents. शूद्र वे हैं जो माता पिता के द्वारा घर में रहकर प्रशिक्षित होते हैं. And the lifelong brahmacharis, they are called Naishtika brahmachari. Lifelong brahmachari, they are called. संपूर्ण आजीवन ब्रह्मचर्य को धारण करते हैं, उन्हें नैष्ठिक ब्रह्मचर्य कहते हैं. Naishtika comes from the word nishtha. नैष्ठिक यह शब्द निष्ठा से आता है. Bhakti bhavati naishtika. So, one who is firmly resolved in his brahmachari life, and one who has never been associating with women. So then he would remain under Guru's protection, and later he will take sannyas. But all these ashrams are oriented towards service. Towards developing the mood of service. Sorry, service attitude, humility, tolerance, celibacy. सेवा भाव, नम्रता, सहनशीलता और मन इंद्रिय का संयम. The ashram is oriented towards developing these moods. जो भी आश्रम है प्रमुख रूप से ये चार गुणों को विकसित करने को है.
like I've said, that this was practiced in the other ages, but how to transplant this mood into Kali Yuga, how to do that. तो वैदिक काल का यह वर्णन श्री नारद मुनि किए हैं, महत्वपूर्ण है इस भाव को वर्तमान कलयुग में कैसे अनुशीलन किया जाए यह समझना. Not possible. That was Satyuga. कोई विचार कर सकता है कि ये तो सतयुग था, सतयुग में संभव था. Well, nowadays people are more individualistic. और कलयुग में वर्तमान परिस्थिति में प्रत्येक व्यक्ति में व्यक्तिगतवाद प्रधान है. And people are very, very anti-authority. और उद्दंडता स्वभाव में अधिक है. So how शासन को स्वीकार नहीं करना चाहते. how to dovetail or to transplant this mood into this Kali Yuga? तो कैसे यहाँ कलयुग में इस भाव को हम स्वीकार कर आत्मसात कर सकते हैं. So it is possible, but by the mercy of Srila Prabhupada ki. केवल श्रील प्रभुपाद की कृपा है जिससे यह ऐसे भयंकर वातावरण में भी संभव है. Of course, by following rules, one becomes happy. Happy. जितना दृढ़तापूर्वक अनुशासन को नियम विधि विधान को पालन करता है उतना उसके जीवन में प्रसन्नता रहती है. Material world people are individualistic, anti-authority. They think that they will be happy, but they will never be happy. भौतिक जगत में हर कोई स्वकेंद्रित है और स्वतंत्र है, अनुशासन को स्वीकार नहीं करता. उनका विचार है कि ऐसे स्वतंत्र रहकर हम बहुत सुखी हो जाएंगे. That's not possible. परंतु यह संभव नहीं है. So in the modern age, how do we apply the principle of brahmachari? आधुनिक जगत में कैसे इन नियमों को अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं? Because circumstances have changed nowadays. क्योंकि परिस्थितियों में और परिवर्तन हुआ है. We cannot just transplant this Vedic system in the modern system. वैदिक सभ्यता है, इसे आधुनिक परिवेश में तुरंत यथारूप वैसे वैसे नहीं रखा जा सकता. But we have the guidelines of Srila Prabhupada and Srimad Bhagavatam. श्रीमद् भागवत और श्रील प्रभुपाद के निर्देश हमारे पास है. So, like the brahmacharis, they have to stay the ashram with guru and they have to chant Gayatri 3 times a day. इस वैदिक काल में बताया गया कि गुरु के आश्रम में रहकर त्रिसंध्या करनी होती है. And they have matted hair. और उन्हें जटा धारण करनी होती है. Kamandalu. जटा होनी चाहिए, कमंडल होना चाहिए. This is Satyuga, but how to transplant this into this Kali Yuga? कलयुग में कैसे इसके भाव को ग्रहण कर सकते हैं? So we have the guidelines of Srila Prabhupada. श्रील प्रभुपाद के निर्देश हैं हमारे पास. So brahmachari means Brahma Acharan, to behave and to practice in the spirit on the spiritual platform. ब्रह्म आचरण का अर्थ है आध्यात्मिक धरातल पर जो जीवन का अभ्यास करता है. It's a lifestyle based on spiritual principles. आध्यात्मिक सिद्धांतों पर आधारित जो जीवन शैली है. A brahmachari has to be very spiritual. ब्रह्मचर्य को बहुत अधिक आध्यात्मिक भावना से युक्त होना चाहिए. Pure. पवित्र होना चाहिए. This is the reason, actually, in fact. Gurukul from the age of 5. कौमार अवस्था से बाल्यावस्था से बच्चों को गुरुकुल में भेजा जाता है. No, because at this age they don't have sex desire. क्योंकि उस समय उनके हृदय में बाल्यावस्था में काम इच्छा नहीं रहती. And by the time they become adult, the mind is sufficiently controlled. और फिर जब तक वो प्रौढ़ होते हैं तब तक पर्याप्त रूप से मन इंद्रियों को संयमित होने का प्रशिक्षण मिल जाता है. Because children are not exposed to distractive things. क्योंकि उस वैदिक काल में बच्चों को गलत वातावरण में जो गलत चीजों के आकर्षण से दूर रखा जाता है. So this is in general the meaning of brahmachari.
तो सर्वसाधारण अर्थ यह है शास्त्र इस ग्रंथ के अनुसार The essence of materialistic life is sex life. भौतिकवादी जो जीवन है है मैथुन जीवन. Materialistic civilization, the essence is sex, but the essence of brahmachari life is celibacy. तो भौतिकवादी जो होते हैं उनका जीवन का सार होता है या काम जीवन, परंतु जो आध्यात्मवादी होता है उनके जीवन का सार होता है ब्रह्मचर्य. Of course, anyone wants to be a good grihastha. It has to be a good brahmachari first, and one can be a good grihastha. कोई अच्छा गृहस्थ बनना चाहे तो प्रथम ब्रह्मचर्य का प्रशिक्षण का आधार होना चाहिए, तभी वो गृहस्थ बन सकता है. Celibacy is 75%. ब्रह्मचर्य का celibacy, yeah. 75% ऐसे ब्रह्मचर्य का अभ्यास है. Brahmachari, vanaprasth, sannyas means 75%. मतलब मानव जीवन का लगभग 3 भाग अगर देखे जाए तो उसमें ब्रह्मचर्य प्रधान है. 25% is grihastha. 25% गृहस्थ जीवन है. So the idea of staying in the ashram, now brahmachari stay in the ashram. What is the idea of staying in the ashram? The idea of staying in the ashram is to have association of other brahmacharis. दूसरे जीवन में प्रमुख रूप से आश्रम निवास का प्रयोजन क्या है? तो सबसे प्रमुख प्रयोजन है भक्तों की संगति, अधिक से अधिक साधु संग को प्राप्त करना. This is very, very important. और ये सबसे अधिक आवश्यक है. What is your other brahmacharis here? Like Advaita and others. Anyway. So, in these days, no one can remain brahmachari alone. वर्तमान परिस्थिति में अकेले कोई भी एकांत में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता. Not possible. संभव नहीं है. One need to stay in the association of devotees or brahmacharis. सबसे अधिक आवश्यक है निरंतर भक्तों के संग में अपने आप को रखें. If one wants to remain brahmachari, he has to have association of brahmacharis. ब्रह्मचर्य के लिए ब्रह्मचर्य संग अति आवश्यक है. There is no substitute. इसके लिए दूसरा कोई पर्याय नहीं है. So, the first principle is if it is something very precious, then it needs to be protected. प्रथम बात हमने जो कही थी, कोई चीज बहुत अनमोल हो तो उसको बहुत सतर्कता से उसको संरक्षित करना चाहिए. So first principle is our protection. तो सर्वप्रथम सिद्धांत इस जीवन का है स्वयं का संरक्षण करना, अपने आप की भावना चेतना को बचाए रखना. And preserved. और उसे फिर संभाल कर रखना. See, this verse Prabhupada has quoted many times. श्रील प्रभुपाद ने इस श्लोक को अपने प्रवचनों में बहुत अधिक बार उद्धृत किया है. So what is the protection offered to the brahmacharis is sangha. वास्तविक संरक्षण ब्रह्मचर्य जीवन के लिए है, वो है संग. Sangha should be very great. और संग बहुत And if there होना चाहिए, बहुत उत्कृष्ट कोटि का संग. And if there is no protection, then it becomes dangerous. और यदि संरक्षण न हो तो यह जीवन भयावह भी हो सकता है. Brahmacharis are becoming endangered species. You know, endangered species? Yeah. I'm saying if there is no protection, it becomes dangerous. The brahmachari will disappear. तो धीरे-धीरे यहाँ ब्रह्मचारी योनि वो ऐसी जाति जो धीरे-धीरे पृथ्वी पर से लुप्त होते जा रही है. Sometimes we are staying in the association of brahmacharis, we may not appreciate other brahmacharis. कई बार ब्रह्मचर्य संग जब प्राप्त होता है, अन्यों का महत्व हम समझ नहीं पाते हैं. Familiarity breeds contempt. अति परिचय से अनादर अवज्ञा हो जाती है. If we stay too close in the ashram with the brahmacharis, and then there is
not enough space in the brahmachari room, and then we conflict. कई बार एक ही आश्रम में रहते हैं, पर्याप्त स्थान अगर न हो तो फिर मतभेद आदि हो जाते हैं. But no matter what happened, you can only remain brahmachari in the association of ये बात मन में दृढ़ कर लेनी चाहिए. कुछ भी क्यों हो जाए, तूफान भी क्यों आ जाए, परंतु ब्रह्मचर्य जीवन को धारण केवल ब्रह्मचर्य संग में किया जा सकता है. So then we must be grateful. इसलिए हमें अत्यंत कृतज्ञ होना चाहिए जो संग हमें प्राप्त होता है. If that brahmachari would not be there, I would not be able to remain brahmachari. यदि इन ब्रह्मचर्य का संग न रहता तो शायद मैं अपने ब्रह्मचर्य जीवन को धारण न कर पाता. Thanks to him. सदैव उसके प्रति कृतज्ञ और आभार व्यक्त करना चाहिए. Even if it's like a cyclone, you said. Even if it is cyclone. भले वो तूफान भी क्यों हो. So it's hard. I know it is very hard to remain in harmony. तो कलयुग के कलहपूर्ण वातावरण में एक समान भाव में बना रहना सहज नहीं है. But this is a protecting shield. परंतु यही संरक्षण की ढाल है इस जीवन में. So Gurukul is very, very crucial. तो यहाँ पर शब्द है गुरुकुल अर्थात यह संग अति आवश्यक है. The first word is dantaha. Dantaha means to try to control the senses, strive to control the senses. अगला शब्द है दांत. दांत का अर्थ है इंद्रियों को पूर्णतः से संयमित करना. So in this material world, the three modes, the senses become agitated. भौतिक प्रकृति में तीन गुणों जो सदैव इंद्रियों को उत्तेजित करते हैं. Acharan, we must practice regardless of the agitation of the mind. आचरण का अर्थ है दृढ़तापूर्वक अभ्यास करना. मन कितना भी अधिक आपको उत्तेजित करे फिर भी इंद्रियों को संयमित रखना. Srila Prabhupada said that sex is like itching of the skin. श्रील प्रभुपाद कहते हैं काम जीवन खुजली के समान है. We need to simply tolerate. जब शरीर में खुजली आती है तो केवल उसको सहन करना होता है, खुजलाना नहीं होता. And it will pass. तो कुछ समय बाद अपने आप को खुजली खत्म हो जाती है. But if we try to crush more and more, then it will become worse. खुजली को यदि आप बार-बार खुजलाने लगेंगे तो वो और अधिक बढ़ जाएगा और खून निकलने लगेगा. Sense control is a matter of practice. इंद्रिय संयम यह केवल अभ्यास का प्रश्न है. Not only precaution, but practice means to tolerate as well. सावधानी केवल पर्याप्त नहीं है, इंद्रिय संयम का अभ्यास भी आवश्यक है. सहन करना वेगों को यह आवश्यक है. To continue tolerate despite the itching. कितना ही इच्छा रूपी खुजली क्यों न हो, फिर भी उसे सहन करना आवश्यक है. One devotee was saying the best way is to neglect the mind. एक बात अपना उपाय बताया, सबसे अच्छा क्या है, मन की कोई बात को ध्यान ही न दे. Yes, okay. And then just neglect. और मन कुछ भी करे तो उसको हाँ कह किसी को टालते रहना और कोई भी उसकी बात को न सुनना. Just like sometime, beautiful girl and handsome boy. Girl is attracted with a boy. कभी-कभी एक नवी कोई युवती होती है, युवती उस युवक के प्रति आकर्षित होती है. And the girl is coming to flatter, the boy, or to attract the boy. अनावश्यक स्तुति चापलूसी आदि करने लगती है उसे. But the boy doesn't give any attention. परंतु लड़की की भी पहले क्यों न करे और वहाँ अगर युवक बिल्कुल ध्यान न दे उसके ऊपर. And again, the second time the girl comes again. दूसरी बार फिर से वही युवती आए. To allure. उसे अपने आकर्षित करने के लिए, विभिन्न प्रलोभित करने के लिए. And the boy doesn't give attention. लेकिन फिर भी वहाँ युवक के बिल्कुल ध्यान न दे. And then the third time the girl comes again. तीसरी बार फिर से वहाँ आएंगी. And the boy doesn't give attention. और फिर से वहाँ आकर्षित करने का प्रयास करे, फिर से वो ध्यान न दे. So then the girl will think, oh, I'm wasting my time, let me go. फिर वहाँ युवती तुरंत विचार करेंगे, अपना समय बर्बाद कर रही है, ये को भाव ही नहीं दे रहा है. So the mind also we should neglect. वैसे ही ये मन है हमारा,
मन सदैव विभिन्न प्रकार के तरह देता है, उसको केवल अगर ध्यान न दे तो धीरे धीरे मन भी शांत हो जाता है। So sense control means tolerance. इंद्रिय संयम का प्रमुख जो अर्थ है वहाँ है सहन करना, Practice, अभ्यास करना, perseverance, और सतत सेवा को बनाए रखना। Of course, brahmachari doesn't means that we hate Matajis. ब्रह्मचर्य का अर्थ यह नहीं है कि वहाँ स्त्री के प्रति उसके मन में कोई द्वेष, ईर्ष्या या अनादर है। Sometimes brahmacharis become rude to Matajis. That's not good. कभी-कभी कठोर हो जाते हैं, वहाँ उपयुक्त नहीं है। Brahmacharis should be strict, but also respect Matajis. ब्रह्मचर्य को दृढ़ रहना चाहिए व्रत में, परंतु साथ ही आदर भाव बनाए रखना चाहिए। Second word is guru, gurur hitam. आगे जो शब्द है यहाँ पर कहा गया गुरुर हितम, Working for guru. इसका अर्थ है कि एक गुरु के लिए कार्य करना। So the disciple work for the benefit of guru and for the mission of guru's mission. शिष्य वह है, Personal agenda. कोई व्यक्तिगत उसका अपना हेतु नहीं होता है उसके कार्य। Mission of the Lord and ISKCON. Prabhupada. भगवान का, गुरु का, श्रील प्रभुपाद, ISKCON का जो उद्देश्य है वही जीवन का एकमेव आधार बन जाता है। So brahmachari doesn't have a separate compartment in his life. उसके जीवन में अलग से कोई दूसरा भाग नहीं होता है गुरु को छोड़कर। Grihasthas also expected to be like that. वास्तविक जगत में गृहस्थ को भी ऐसे ही ब्रह्मचर्य नियम की आशा की जाती है उससे। But Grihastha has given also some freedom. लेकिन कुछ अल्प स्वतंत्रता गृहस्थ जीवन में होती है, which is not given to brahmacharis. किंचित मात्र भी ब्रह्मचर्य जीवन में नहीं दी जाती। Because too much freedom for brahmachari is quite dangerous. क्योंकि स्वतंत्रता ही ब्रह्मचर्य जीवन में अधिक घातक है। Like I have said, the modern mentality individualistic. क्योंकि भौतिक जीवन अभी वर्तमान में ही है, प्रवृत्ति बन चुकी है, वह है स्व केंद्रित होने की बात। Freedom oriented. और स्वतंत्रता की प्रवृत्ति बहुत अधिक बन चुकी है। And modern people are very anti-authority and also anti-establishment. और वर्तमान प्रवृत्ति में अधिक जो भावना बन चुकी है, वहाँ किसी अनुशासन को स्वीकार न करना, स्वतंत्र होना और anti-establishment, anti-government, anti-authority. व्यवस्था को, किसी सरकार को, किसी शासन को, किसी अधिकारी को स्वीकार न करना, यह प्रवृत्ति कलयुग में बहुत अधिक प्रबल हो चुकी है। That's how they have become hippies in America. So the brahmachari should be very cautious that he's saying his own motivation that does not have any personal motivation. ब्रह्मचर्य जीवन में अत्यंत सतर्कता होनी चाहिए कि व्यक्तिगत उसका कोई हेतु प्रयोजन न हो। He's completely surrendered. पूर्णतः से उसका जीवन न्यौछावर हो जाए। So surrender is a hallmark of a brahmachari. समर्पण यह Hallmarks. Marks means ये प्रमुख प्रधान चिन्ह है समर्पित होना। yeah. ब्रह्मचर्य में। So if one is not surrendered, then it is hard to remain brahmachari. यदि वह समर्पित न हो तो दीर्घ काल तक वह इस व्रत को पालन नहीं कर पाता। Hard to remain brahmachari for long. दीर्घ काल के लिए वह ब्रह्मचर्य रहना अत्यंत कठिन है। So this is a very important to consider. तो यह अत्यंत ध्यान देने योग्य बात है। Next is dasavat. अगला शब्द यहाँ पर नारद मुनि का दासवत। Brahmachari means one who is humble, menial servant. बहुत ही निम्न
नम्र होता है और सभी को दास होता है, दास भाव प्रधान होता है। Of course, no question of being proud. I am brahmachari. गर्व का प्रश्न नहीं उठता। ब्रह्मचर्य जीवन और गर्व ये दोनों ही विपरीत हैं। I'm proud I've been able to control my senses better than you. So if you're proud, then you will not be able to remain brahmachari any longer. जैसे गर्व प्रवेश कर गया मन में, तो वहाँ फिर ब्रह्मचर्य को धारण नहीं कर पाएंगे। I'm such a strict brahmachari. I am austere. कठोर हूँ, मैं तपस्वी हूँ। I'm learned. मैं ज्ञानी पंडित हूँ। I work so hard. मैं बहुत कड़ी मेहनत करता हूँ। So this kind of mood will keep pride in the heart. इस तरह की भावना यदि आए तो वहाँ अभिमान, अहंकार, गर्व को लेकर आएंगे। And I do this service nicely. मैं बहुत ही अच्छी सेवा करता हूँ। Expert than the other brahmachari. मैं सभी से अच्छा दक्ष हूँ मेरी सेवा में। So brahmachari should be very careful against pride in the heart. ब्रह्मचर्य को बहुत ज्यादा सतर्क रहना चाहिए, हृदय में कभी अभिमान ना आए। Otherwise, it will invite lust to come to the heart. अहम तुरंत हृदय में काम को आमंत्रित करता है। So pride bring lust. अहंकार यहाँ काम को Come, one cannot remain brahmachari. और जब काम से प्रभावित हो तो फिर ब्रह्मचर्य धारण नहीं कर पाता। So important, very important, in order to protect brahmachari. So these points are very important. Always remain in a mood of service. अति आवश्यक यह भी बात है, ब्रह्मचर्य धारण करने निरंतर सदा सेवा भाव में स्वयं को बनाए रखें। So dasavat means a devotee should be ready to do anything at any time. शब्द का अर्थ है कि किसी भी समय कभी भी कोई भी कार्य करने के लिए जो तुरंत तैयार हो। When he is asked to do, is ready. जब उसे कुछ कहा जाए तुरंत वहाँ तत्पर हो जाए सेवा। If he is not asked. अगर उसे ना भी कहा जाए तो भी। As we know, when brahmachari, they have said, brahmacharis, they can eat only when Guruji call. Please come and eat. जैसे यहाँ पर वैदिक नियम हम सुनते हैं कि ब्रह्मचारी को भोजन ग्रहण करने अनुमति तभी है जब गुरु उन्हें आदेश देता है। If Guru forgets, then he should starve. अगर गुरु ने अगर उनको कहना भूल गए तो उस दिन ब्रह्मचारी को उपवास करना चाहिए। So next word is नीचा। नीचा. नीचा means being submissive servant, obedient. यहाँ पर नीच का अर्थ प्रभुपाद का है समर्पित तथा आज्ञाकारी। Keep a low profile. Keeping a low profile. मतलब अपने आप को निम्न बनाए रखना। So makes himself available when it comes to service. स्वयं को सदैव तत्पर रखना जब भी सेवा का अवसर आता है। Sometimes brahmachari they keep some aura around them. You cannot approach them. कभी-कभी उनका आभा मंडल होता है, आप हिम्मत नहीं कर सकते उनके पास जाने की, डरते लोग उनके पास जाने से। You can't tell them anything. और उनको कुछ कहने से भी लोग भयभीत हो जाते हैं। You're afraid to tell him to do something. भय रहता है कि उसे कुछ सेवा बता दो तो कहीं वो शेर की तरह झपटा न मारे। Some devotees are like that, right? Because you approach him, it's a waste of time, वैसे नहीं इसके पास जाना हो तो समय बर्बाद रहने दो, ये तो कुछ सुनने वाले नहीं। Because he has make an aura around him. लेकिन उसने ऐसा आभा मंडल अपने भी चारों बना लिया है कि कोई भी उसकी समीप नहीं जाता। And no one will be able to approach him. और कोई भी उसके पास जाएगा नहीं। So then he is losing the chance to make spiritual advancement. आध्यात्मिक जीवन प्रगति का बहुत स्वर्णिम अवसर वो गवा रहा है। So brahmachari is obedient, submissive, approachable, and accessible. Brahmachari is submissive, समर्पित, approachable, और सहजता से उपलब्ध रहता है। accessible. Yeah, approachable, accessible. Yes. सहजता से हमेशा उपलब्ध रहता है हर एक के लिए। Then Guru Surida, Surida. So we should be having a firm attitude of friendship for the spiritual master. और
आध्यात्मिक गुरु के प्रति अत्यंत सुदृढ़ मैत्री भाव होना चाहिए. So, firm attitude of friendship, loyalty is a hallmark. तो निष्ठा यह प्रमुख चिन्ह है मैत्री भाव का. It should be also sushil. ईमानदार प्रामाणिक रहना. Sushil means polite. सुशील अर्थात विनयशीलता. And behave very well, gentle. और बहुत ही सज्जन व्यवहार होना चाहिए, मृदु व्यवहार होना चाहिए. It should be courteous. Courteous. दूसरों को बहुत अधिक आदर देने वाला होना चाहिए. Courteous means somebody do something and he says thank you. That is, and also respect those who are also giving respect to others, not only guru but other elderly person. Sometimes brahmacharis, what they would do to become too friend with other senior brahmacharis, start playing, start doing something, and then it become disrespectful, or pulling his leg, pulling his chika, it is not good. बहुत ज्यादा ऐसा एकदम खुलापन हो जाए कि कोई वरिष्ठ भक्त है उनके आप बहुत पास चले गए, फिर आप उनके पैर खींच रहे हैं, उनकी शिखा खींच रहे हैं. If Guru comes and hugged, if Guru or senior devotees come and hug the junior devotees, how should you take it? Guru तुल्य हो, गुरु स्वयं के हो, वे अगर आकर आपको आशीर्वाद देते, आलिंगन करते हैं. How do you take it? You can accept it, but still you should keep your humility. Yes, it's not that, oh, Guru have hugged me, now I'm friend with Guru. No, you should keep your respect. And respect, we should also be respecting teachers. Brahmacharis should also respect those people who are able to control their senses, like sannyasis. Prabhupada said even to respect the Mayavadi sannyasis. What does Prabhupada speak? Respecting grihastha also. Not only us. Controlling the belly, controlling the genitals, and regulate the senses. It should be expert in cooking, expert in learning. He should be also learning, educated, and not lazy. He become active and take initiative. And expert and also have faith in the Shastra. And there is no meaning of brahmachari if you don't study. No meaning of student if you don't study. One cannot remain brahmachari if he does not study. So what is the next word? So full control of the senses. Associating with opposite sex is not permitted.
One cannot remain brahmachari associating with his opposite sex. So we should not demotivate devotees to remain brahmachari. प्रत्येक को ब्रह्मचर्य नियम के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, किसी को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए कि तुम नहीं रह सकते. We should inspire others. अन्य को प्रेरित करना चाहिए ऐसे जीवन के लिए. Because life brahmachari is simple. क्योंकि ब्रह्मचर्य जीवन अत्यंत सरल है. You have a small place in the ashram. बहुत छोटी सी जगह में लगती है. You're happy. और उसमें वे संतुष्ट रहते हैं. Grihastha life needs big house. Brahmacharis don't have many luggage. Little space you are happy. So, of course, the controlling brahmacharis should respect elderly people, teachers, seniors. बड़ों को, शिक्षकों को, गुरु को, वरिष्ठों को सदैव आदर दें. Of course, Chaitanya Mahaprabhu was very strict sannyasi. निसंदेह भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत कठोर संन्यास का पालन करते थे. He's been even chastising Chota Haridas. यहाँ तक कि इस प्रसंग में देखा किस तरह से उन्होंने छोटा हरिदास को भी प्रताड़ित किया था. Chota Haridas has gone to collect rice. छोटा हरिदास जो है भिक्षा में चावल मांगने के लिए गए थे. And the devotee had cooked. Mahaprabhu has eaten the rice. और फिर परमानंदपुरी ने I don't know, maybe Raghav Pandit, I don't know. तो फिर एक बार ने उस जो भिक्षा में चावल लाया था उसको पकाया और वह फिर श्री चैतन्य महाप्रभु को परोसा गया. Mahaprabhu asked, where did you get this rice? जैसे चावल को देखते बराबर चैतन्य महाप्रभु का ये चावल कहाँ से मिला, किसने लाया? He has eaten also. चावल को केवल ग्रहण करते बराबर तुरंत उन्होंने प्रश्न पूछा. So and they said that this Chota Haridas has collected. तब वो वहाँ पर परमानंद कहे कि यहाँ छोटा हरिदास इस चावल को लेकर आए. Mahaprabhu, just by eating this rice, he could understand. चैतन्य महाप्रभु की ऐसी अवस्था थी, केवल उस चावल को ग्रहण करने बराबर वहाँ समझ गए उसके अंदर की भावना. That Chota Haridas mood, he was lusty. कि छोटा हरिदास का भाव पवित्र नहीं था उस भिक्षा को मांगते समय. And this rice was collected from Sikhi Mahiti's sister, Madhavi. और जो शिखी माहिती चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख परिकर में से एक है, उनकी बहन थी माधवी माता जी, उनके पास से भिक्षा मांगकर छोटा हरिदास चावल लाए थे. And she was not a young girl. और वो बहुत ही बूढ़ी थी, वयोवृद्ध थी. But in other places mentioned, और वहाँ वर्णन किया गया कि उन्होंने अपने दृष्टि से उसे देखा. And because of that, Mahaprabhu was so strict. Mahaprabhu just chastised him and banned him. तुरंत चैतन्य महाप्रभु अत्यंत क्रोधित चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें प्रतिबंधित कर दिया, संघ से दूर कर दिया और बाहर निकाल दिया. उन्होंने कभी अपने जीवन में स्वीकार नहीं किया. Chaitanya Mahaprabhu, one time he was a little boy. He would come, and Mahaprabhu was very compassionate toward the boy. भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे. उस समय एक नन्हा बालक सदैव चैतन्य महाप्रभु के समीप आता था और चैतन्य महाप्रभु के हृदय में विशेष दया भाव था उस बालक के प्रति. And the boy's mother was a widow. लेकिन उस नन्हे बालक की जो माँ थी वह विधवा थी. Widow, beautiful and young. वो विधवा थी, तरुणी थी और अत्यंत सुंदर थी. But the boy would be associating with Mahaprabhu. और वो नन्हा बालक आता था श्री चैतन्य महाप्रभु का संग प्राप्त करने के लिए. But Damodar Brahmachari, he came and chastised Chaitanya Mahaprabhu. दामोदर पंडित जो ब्रह्मचारी थे अत्यंत क्रोधित हुए और उन्हें साक्षात भगवान चैतन्य महाप्रभु को डांट लगी. What are you doing? आप ये क्या कर रहे हैं? इस नन्हे बालक के साथ आप क्यों बैठे? Imagine he has the adhikar to even chastise the Lord. दामोदर पंडित वे एक महान भक्त थे जिनको अधिकार प्राप्त था कि भगवान को भी डांट लगा सके.
he used to have a stick. अपने हाथ में छड़ी लेके वो चैतन्य महाप्रभु को डांटते थे। What are you doing? This boy's mother is a widow. और तब उन्होंने दामोदर पंडित ने आपको समझ भी नहीं आ रहा है, ये नन्हे बालक की जो माता है वह विधवा है। And people seeing you dealing with that boy, they will be. जनसाधारण आपको इस नन्हे बालक के साथ आदान प्रदान करते हुए देखेंगे। There will be criticism. और वे भी आपकी आलोचना निंदा करेंगे। And Mahaprabhu, he accepted that chastisement. तुरंत भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस प्रताड़ना को हर्षपूर्वक स्वीकार किया। Because Mahaprabhu wanted to set the highest principle of brahmachari sannyasi life, detachment. श्री चैतन्य महाप्रभु सर्वश्रेष्ठ आदर्श को प्रस्थापित करना चाहते थे वैराग्य जीवन के। And Mahaprabhu stopped it from that day. और उस दिन से श्री चैतन्य महाप्रभु कभी उस नन्हे बालक से नहीं मिले। You're such a great devotee. आज मुझे बचा लिया। So the principle is very important to understand. We don't become fanatics. हम जो है कट्टरवादी नहीं बन सकते, लेकिन उस सिद्धांत को अपने जीवन में आत्मसात करना अति आवश्यक है। But then Haridas Thakur, if he had gone and committed suicide. आगे देखा गया कि फिर छोटा हरिदास जगन्नाथपुरी छोड़कर चले गए और उन्होंने आत्महत्या कर ली। And Mahaprabhu heard about it and he said, yes, that's a danda, that is a punishment. उस समय जब चैतन्य महाप्रभु समाचार मिला, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि यहाँ उचित शिक्षा है उसके लिए। So this principle of association is not that we hate, we become hate of the opposite sex. जब स्त्री संग वर्जित है, इसका अर्थ यह नहीं कि स्त्री के प्रति ईर्ष्या या द्वेष भाव है। So, but Matajis give blessing. जो स्त्री माता है जो है वह आशीर्वाद प्रदान करती है। So the blessings of Matajis are very important. ब्रह्मचर्य जीवन में प्रत्येक स्त्री का आशीर्वाद अति आवश्यक है। If Matajis give blessing, will make advancement. यदि माता है आशीर्वाद दे तो ब्रह्मचर्य जीवन में बहुत उत्कर्ष होता है। So how to also look at Matajis. Matajis, they are like considered like mother. That's one way. प्रथम जो कैसा भाव होना चाहिए, प्रथम भाव कहा गया है, मातृभाव अति आवश्यक है। Second is to see them like spirit soul. और फिर आगे जब आध्यात्म में प्रगति करते हैं तो फिर आत्मा के स्वरूप में देखा जाता है। Third is to see them as Vaishnavi. और फिर और जब प्रगति होती है तब वो वैष्णवी के रूप में उन्हें देखा जाता है। So respect should be there. Otherwise, if we become loose, Shastra explained for brahmachari and sex, it is like fire and butter. जिस प्रकार से भागवत में कहा गया है कि पुरुष और स्त्री किसके समान है, तो अग्नि और मक्खन के समान। So the sense control is very important. Parishit Maharaj asked a question to Sukadeva Goswami. परीक्षित महाराज इंद्रिय संयम अति आवश्यक है, इसके विषय में सुखदेव गोस्वामी जी क्या कहते हैं? Why Rishabdev did not use his mystic power? Rishabdev did not use his mystic power. परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं 5वें स्कंद में कि भगवान ऋषभदेव अपनी सिद्धियों का प्रयोग उन्होंने क्यों नहीं किया? He said that अपने मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। if a hunter catches an animal alive, if he is not careful, अगर कोई शिकारी जीवंत प्राणी को पकड़ लेता है और यदि वो सावधान न रहे, two things will happen. Two things can happen. तो अगर वो सावधान न रहे तो दो बातें हो सकती हैं। What can happen? Either the animal run away or he can kill the hunter. दो बातें हैं, अगर शिकार को पकड़ के अगर वहां सावधान न रहे तो शिकार भाग जाएगा या शिकार जो है शिकारी को ही मार डालेगा। So similarly, if we are not careful, conscious, watchful towards the senses, either the senses will run away or the senses will kill us. उसी प्रकार से मन है और इंद्रिया है, इनको अगर पकड़ के रखा है परंतु अगर सतर्क न रहे
एक तो यहाँ बाहर के संसार में भाग जाएंगे और अंततः हमें ही मार के रहेंगे. So this is why the brahmacharis should remain vigilant. इसीलिए बहुत सतर्क और सतत अपना अवलोकन निरीक्षण करते रहना चाहिए ब्रह्मचर्य. And what's the mind? और निरंतर अपने मन की समस्त भावना विचारों पर ध्यान रखना. Because by nature mind is restless, chanchalam. क्योंकि मन का स्वभाव चंचल है. Should not make friend with the mind. मन से मित्रता नहीं करनी चाहिए. If we place confidence in the mind will cheat us. मन पर ज्यादा विश्वास कर लिया तो मन आपको धोखा देके गिरा देगा. One time there was one grihastha and a brahmacharini in the kitchen. Brahmacharini was helping cooking. ब्रह्मचारिणी. Yeah. एक समय गृहस्थ एक रसोई घर में थे और साथ में ब्रह्मचारिणी ने सहयोग कर रही थी. So one day service, 2 days service, 1 month, 2 months, 3 months, and slowly, this attachment. धीरे-धीरे साथ में सेवा करते उनमें आपस में आसक्ति बढ़ गई. And then they left both. और फिर वहाँ गृहस्थ उस ब्रह्मचारी के साथ चला गया. So this is also very, very important to understand that management should also see that this thing doesn't happen. व्यवस्थापन में आवश्यक है कि कैसे एक सुरक्षित अंतर सदैव बना रहे. So if we not control the mind, then the mind will give facility, will give chance, will give facility to the enemies like lust, anger, and greed. पकड़ के नहीं रखा गया तो मन मौका दे देगा. ये हमारे If a yogi doesn't control the mind and give facility to lust, anger, and greed, and that enemy will kill the yogi. कोई योगी यदि मन इंद्रियों को बांध कर न रखे और अवसर दे इन विकारों को तो विकार ही काम क्रोध आदि से नष्ट कर देंगे. So brahmacharis means to act on the spiritual platform. तो सार में ब्रह्मचर्य जीवन का मूल आधार है आध्यात्मिक धरातल पर उसका अभ्यास सदैव बना रहे. It is not meant to become woman hater. वहाँ किसी स्त्री के प्रति ईर्ष्या द्वेष का भावना. Is not meant to become proud. वो कभी अभिमानी गर्वी न हो. Is not meant to become too strict. I mean, proud or it's meant to develop love for Krishna. अंततः इसका प्रयोजन है श्री कृष्ण के प्रेम का अनुभव करना. And life will become very beautiful, blissful. तो फिर जीवन में बहुत दिव्य आनंद से भरा हुआ है. So that's the meaning of this verse today. आज के श्लोक के हम कुछ चर्चा करते हैं. And this is very nice that Narad Muni is the best brahmachari. He means नारद मुनि सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मचारी. Going all over the world is making brahmacharis, sannyasis. संपूर्ण संसार में जिन्होंने असंख्य जीवों उद्धार करके ब्रह्मचारी बनाया. Hare Krishna. Srimad Bhagavatam ki, Sri Prabhupada ki. We'll stop here if anybody have any question. How should be the? Toward the brahmachari? माता जी प्रश्न है कि माताओं ने कैसा व्यवहार करना चाहिए ब्रह्मचारी के साथ. If brahmachari is calling mata, means then the brahmachari become the son, right? ब्रह्मचारी माता जी कह रहे हैं मतलब माता जी में पुत्रवत भाव होना चाहिए कि ये मेरे बालक के समान. So how a mother behave with a son, but of course माँ अपने बच्चे से कैसे व्यवहार करती है परंतु it is said also in the purport, Prabhupada explained the purport, that if Guru Patni is young, then the brahmachari should not take service. That's also mentioned. तो माता पुत्रों व्यवहार होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जैसे वर्णित किया गया है कि जब गुरु पत्नी के साथ गुरु आश्रम में गुरु पत्नी यदि युवा हो तो ब्रह्मचारी उनसे कोई सेवा ग्रहण नहीं कर सकता है. So ISKCON has set up many rules. Just abide by this.
रखा जाता है, व्यवहार कैसा हो उसके We cannot become too close also because we're not on the platform. तो सामीप्य नहीं होना चाहिए, अंतर सदैव बना रहना चाहिए. Respect, like आदरपूर्ण अंतर आवश्यक है. brahmacharis also would be respecting the Matajis, but from a right respect Matajis, but from a distance. That's a rule. Respectful distance. Yes. जैसे ब्रह्मचारी कहा गया है कि अंतर बने और आदर बना रहे, ये दोनों बातें अति आवश्यक है. In some अतिक्रमण हो जाता है. and when standard goes down, you see the temple also जैसे ही ये मर्यादा जहाँ पर पालन नहीं होती है, collapse. तो वहाँ पर फिर क्रमशः Some sannyasis, दुर्भाग्यवश इतिहास में देखा गया है कि कुछ गुरुओं में भी इस तरह से सामीप्य देखा गया. so that when standard goes down and then it becomes a standard. और जो वहाँ गौण नीति नियम का जब अतिक्रमण लगता है, धीरे-धीरे फिर उसकी आदत बन जाती है सभी को. And the newcomers come, they see, oh, that's a standard. तो नए लोग देखते हैं ऐसा व्यवहार हो रहा है, ये वरिष्ठ भक्तों में ऐसा व्यवहार है, तो वही फिर आदर्श बन जाता है नए को सीखने के लिए. And then they also start following that. तो वो भी उसी तरह का व्यवहार करते हैं, वो भी ऐसी बातचीत करते हैं. So as devotees, senior devotees, when we see standard going down, we should always try to raise it, because Kali Yuga, that's the effect of Kali Yuga. Standard will always go down, but you need वरिष्ठ का to. ये उत्तरदायित्व है कि जब ऐसे कुछ मर्यादा नीचे गिरने लगती है, तो समय समय कलियुग उसमें स्वाभाविक है कि धीरे धीरे नियम में कोई ढिलाई आ जाती है, परंतु पुनः पुनः उसे ऊपर करने का प्रयास करना चाहिए. I know I came to Krishna consciousness in 1982. मुझे स्मरण है 1982 में कृष्ण भावना के संपर्क में आया. Nowadays we have more devotees, but the standard is not the same as it was. तो उस समय भक्त बड़े कम थे, अभी बहुत ज्यादा भक्त हैं, लेकिन उस समय हमारे समय जो स्टैंडर्ड रहते थे, वैसा स्टैंडर्ड अब नहीं देखा जाता है. So and then nowadays humility, humbleness, and mood, seva mood, and nowadays tendency to become more individual. आजकल स्वतंत्र होना, नम्रता का अभाव होना, सेवा भाव का अभाव, ये अधिक देखा जाता है, पहले इतना नहीं था. Before it was more. पहले बहुत अधिक नम्रता सेवा भाव रहती थी. Now everybody have their mobile phone, so अब तो हर किसी के हाथ में मोबाइल रहता है, तो उसे I have my own world. मेरी अपनी दुनिया है, मेरे पास प्रवचन है, मुझे किसी सुनने की जरूरत नहीं. But the strictness and the service bhav, humility was different at that time. पहले उस समय जो कठोर अभ्यास था, नम्रता सेवा भाव पहले बहुत था, अभी उतना नहीं दिखा. So and Matajis and Prabhus, separate. It was like पहले उस this. समय माताएं प्रभु बहुत अंदर में रहता था, आजकल उतना नहीं था. So if we need in Kali Yuga, Kali Yuga it will tend to decrease, but we need to rise up. कलियुग का कलियुग में धीरे-धीरे पवित्रता जो है वो कम होने लगती है, तो हमें प्रयास करना चाहिए पुनः. No, it is difficult to raise a standard. It will take, it's not today and tomorrow. If some standard has gone down, it is not today and tomorrow. It will take some time. जैसे कोई नियम है, कुछ आदर्श है, वो अगर कम हो चुके हैं, तो उसको पुनः वापस ऊपर उठाने में समय लगता है, एक रातों रात कोई चीज होती नहीं है. But if we try it somewhere, slowly it will rise. और हम निरंतर प्रयास करते हैं, तो धीरे-धीरे हम ऊपर उठने लगेंगे. Consciousness will change. और फिर चेतना भावना फिर पवित्र होने लगेगी. And we become dynamic and vibrant temple. तब वहाँ चैतन्यता और आध्यात्मिक भावना से भर जाएगा. Our society is called International Society for Krishna Consciousness. So, yes, Mataji has another question? Is another class. Egg minute.
एक मिनट, another question? और इस आज जो चर्चा है उससे संबंधित कोई प्रश्न है? माता जी बाद में। हाँ, उसका उत्तर देंगे। ब्रह्मचारी और गृहस्थ एक दूसरे को कैसे आदर कर सकते? कई बार प्राय देखा जाता है कि ब्रह्मचारी गृहस्थों की निंदा करते रहते हैं, ये भोगी है, ये है, वो है ना, और गृहस्थ बोलते कम लोग हैं, काम धंधे नहीं, सोते रहते हैं। तो ये आंदोलन जो श्री प्रभुपाद जी ने स्थापित किया है, ये तो गृहस्थ और ब्रह्मचारी सबके लिए स्थापित किए हैं, तो एक दूसरे को कैसे मतलब सहयोग आध्यात्मिक जन्म करके और आदत भाव को बढ़ाते हुए इस आंदोलन को और अपने आध्यात्मिक जीवन को बढ़ा सकते हैं? Very good question. So there should be harmony. दोनों में सामंजस्य अति आवश्यक है। So brahmacharis should appreciate also the grihasthas. तो ब्रह्मचर्य को भी गृहस्थ जीवन के प्रति सराहना आवश्यक है। Just see how, despite is having family, is working, taking care of the family. यह गृहस्थ जिसका इतना बड़ा उत्तरदायित्व, इतनी जिम्मेदारी है, इतना परिवार है, इतना कार्य व्यवसाय, उसके बावजूद भी वहाँ कृष्ण भावना के लिए गंभीरता से समय निकालते हैं। Still he is coming to temple. फिर भी वो समय निकाल लेते हैं मंदिर आने। Still he is doing service. और इतना ही नहीं, इस मंदिर में महत्वपूर्ण सेवाओं को भी अर्पित करते हैं। Despite doing so many things, still he is practicing Krishna consciousness. इतना बाहर करने के बाद, कार्य करने के बाद भी वह अपनी निजी साधना भी नियमित रूप से करते हैं। This is appreciation. इस तरह से सराहना का भाव होना चाहिए। Ramanujacharya, his brahmachari, sannyasis, they were fighting against Kopin. You took my Kopin, or you took my Kopin. रामानुजाचार्य के कुछ ब्रह्मचारी सन्यासी शिष्य थे, आपस में लंगोट के नाड़े के लिए झगड़ रहे थे। He wanted, Ramanujacharya wanted to do that, to see how they tolerate. तो वहाँ देखना, उनकी परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उनकी कॉपिन आपस में जानबूझ के बदल दी थी, देखने के लिए कितना वो सहनशीलता उनमें है। कॉपिन के लिए झगड़ने लगे। But he had one grihastha disciple. लेकिन उनका एक गृहस्थ शिष्य थे, Dhanudas. So he called he told the brahmacharis, you secretly go to the window of Dhanudas, his wife may be there sleeping, you steal her ornaments. वहाँ पे रामानुजाचार्य आदेश दिए ब्रह्मचारी को कि तुम छुपके से जाना धनुदास के घर में, जब उनकी पत्नी सो रही होगी खिड़की से जाना, और जब वो सो रही है उस समय धीरे से उसके शरीर पर जो आभूषण है वो सब आभूषण चोर के लेके आना। And I will call Dhanudas here. जब मैं धनुदास को यहाँ बुला लूंगा उस समय तुम वहाँ पर जाना। So the brahmacharis went and his wife was sleeping and they get inside and trying to get the ornaments. तो वहाँ पर बताया कि धनुदास यहाँ रामानुजाचार्य के पास आ गए, तब ब्रह्मचारी शिष्य वहाँ गए और माता जी उनकी पत्नी सो रही थी, उन्होंने उनके गहने निकालना प्रारंभ किया। While they were trying to get it out and the wife turned aside and the brahmachari just went to outside, scared. एक तरफ के गहने निकाल भी रहे थे, तब उनकी पत्नी दूसरे और उन्होंने करवट बदली, जैसे करवट बदली तो ब्रह्मचारी डर के मारे वहाँ से भाग गए। And the wife, when the husband came back, the wife asked the husband, is there any difficulty in the temple? Do we not have enough money to maintain? And the husband asked, what happened? All the brahmacharis came and they wanted to steal my ornaments. Husband said, and then what did he do? I've turned back. And the husband chastised, you fool. You should have given to them.
अरे तुमने पूरे गहने निकाल के दे देने चाहिए थे। Now we are missing that seva, Guru seva. इतनी बड़ी स्वर्णिम सेवा का अवसर मिला था और तुम गवा बैठे। And all brahmacharis were listening. What's और वहाँ happening? ब्रह्मचारी खिड़की में कान लगा के सब सुन ही रहे थे क्या उनकी चर्चा चल रही। And then they came back to Guru. They also add that wife actually turned only for that purpose only. Oh, to take. To give the other side or not. Oh, right. Yes. So when they came back, they told the Guru. तो और एक बात जो पत्नी भी कहती है कि वास्तविक उन्होंने करवट क्यों ली थी, क्योंकि एक तरफ के गहने निकाल के दूसरी तरफ गहने निकालने में कठिनाई न हो, इसीलिए वो करवट ली थी। So they wanted to say तो यह सब बातें सुनकर फिर how. शिष्य गए और रामाचार्य को सुनाया उन्होंने। So brahmacharis were fighting because of kopins. यहाँ ब्रह्मचारी जब केवल कोपिन के लिए छोटे से झगड़ रहे थे। Here grihasthas, they want to offer to Guru और wealth. गृहस्थ वे थे जो अपना सब कुछ न्यौछावर करने में तैयार थे गुरु को। But grihasthas also should appreciate brahmacharis. परंतु साथ ही में जो गृहस्थ जन हैं उन्हें बहुत अधिक आदर और सराहना करनी चाहिए जिन्होंने ब्रह्मचर्य जीवन को धारण किया। How they are fortunate. कितने वो भाग्यशाली हैं Brahmacharis are serving full time in the temple. जो निरंतर भगवान के चरणों की सेवा में लगे रहते हैं। And I'm caught up in family life. और मेरा ये दुर्भाग्य कि मैं इस संसार के अन्य कार्य में उलझा हूँ। And grihasthas also supposed to be protecting और brahmacharis. सबसे अधिक आवश्यक है गृहस्थ को सदैव ब्रह्मचर्य का संरक्षण करना चाहिए। Protect brahmacharis, protect sannyasis. गृहस्थ का उत्तरदायित्व रहता है कि ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, सन्यासी अन्य तीन आश्रमों का संरक्षण करें। In that way, they will be. सामंजस्य बनाने। And this prajalpa mood, that also should be avoided. ये प्रजल प्रवृत्ति है उसको त्यागना चाहिए। That would spoil the atmosphere of the temple. जो संपूर्ण आध्यात्मिक भावना वातावरण को दूषित कर देता है। The way it can be avoided, everybody engage in service. और यह किस तरह से टाला जा सकता है? सभी को पर्याप्त रूप से सेवा मिलनी चाहिए, पूरी तरह सेवा में संलग्न रहना। Grihasthas also should be engaged in service, book distribution, preaching, life members. पर्याप्त रूप से सेवा, ग्रंथ वितरण आदि में प्रचार में लगना चाहिए। And brahmacharis also should be engaged in service. Otherwise, there will be prajalpa. जब सेवा पर्याप्त न हो, तभी फालतू समय मिल जाता है अन्य चर्चा करने के लिए। We are living in a community. There should be love. समुदाय का आपस में प्रेम अति आवश्यक है। Any other question? Otherwise, we'll come. Do we have time? We can continue Tomorrow. departure. Oh, From 7:30 we can have 7:30 to 8. tomorrow I'll be leaving. Okay. But Mataji's question tomorrow will huh? One weekend. One can be. One more. One can Mataji's question. Achintya? Mataji, what she said about it? She has heard this word and read a lot, but it's not very clear. So you can just explain what exactly is this. In fact, this morning I was thinking of giving a Bhagavatam class, and that point would have come in the class. आज प्रातःकाल में तो वैसे मैंने भागवत कक्षा में विचार करा था तो वही विषय आने वाला था चिंतन में। But that's come brahmachari. परंतु विषय परिवर्तन हुए। Achintya means Chaitanya Mahaprabhu, he has taken two principles from each sampradaya. भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रत्येक संप्रदाय से दो प्रमुख शिक्षाओं को ग्रहण किया। Like the philosophy of Madhvacharya is Dvaitavad. मध्वाचार्य की प्रमुख दर्शन है वहाँ द्वैतवाद कहलाता है। दो भगवान और जीव जीव और भगवान दोनों अलग है, भिन्न है। जीव और भगवान दो है, एक नहीं है। इस बात पर बहुत अधिक जोर दिया कि जीव भगवान कभी एक नहीं हो सकते, वे दोनों अलग सदैव बने रहते हैं। और another theory is